We are live. Abhinandan, you can share the YouTube link to the students so that they can watch from that there itself. वहाँ से वो देख लेंगे. Yes, so right now I am sharing my screen. Just let me know क्या screen share हो चुकी है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. तो इस स्क्रीन में जो प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट भी होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जैक्टली आप लोगों के लिए कंटेंट है. तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनेगा. हो सकता है लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएं. फाइन. तो विल चेक आप सच में NIT हो या नहीं. ऑब्वियसली यू आर NIT, डोंट वरी, डोंट हैव अ डाउट. मूविंग अहेड. वंस व्हाट हैपेंड. अब देखिए जो आज का टॉपिक है माइंड कंट्रोल. अब स्पेसिफिकली ये टॉपिक हमने चूज क्यों किया है? वी हैव सीन सो मेनी केसेस अ स्टूडेंट और अ पर्सन्स फाइटिंग विद द माइंड. अगर माइंड बहुत वीक है, अगर वो माइंड को नहीं समझ पाए, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, he give up his study, he gives up his life, he commits suicide. In so many cases we have seen in my own IITs, in NITs, in different colleges, even in professional lives and corporates, we have seen even small ups and downs in their life, people take a very strong steps in their life. Asuchi, can any problem be a bigger problem than your life itself? No, not at all. तो आप लोगों के लिए एक तो चैट अवेलेबल है. आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग चैट पे आंसर करोगे. क्लियर? तो और जो लोग वीडियो ओपन किए हुए हैं आप लोग लिप्स मेकिंग कर सकते हो. आई विल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू स्पीक. आप लोग गुमशुदा या बहुत somebody हो चल क्या रहा भाई, कौन सी लैंग्वेज सेशन चल रहा है, जापानीज है चाइनीज है, तो ऐसे डम स्टक मत बैठेगा. यू शुड रिप्लाई. क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस एग्रीमेंट इज डन? फाइन. ओके. यस. सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्टोरी ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस एग्जीक्यूटिव. बहुत ही हाई लेवल पे इनका बिजनेस चल रहा होता है. एंड एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. तो बिजनेस इज क्वाइट ह्यूज. But what happens due to some ups and downs in the business, वो करोड़पति से बन जाता है रोडपति. सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं जिनसे भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लिए गए थे. इन्वेस्टर साथ छोड़ देते हैं और जिनका भी लोन या कुछ था, they are continuously calling, my dear ones, you give me this much and this much, otherwise you're gone. Or almost all family members rejected him. Now he is sitting on the sea beach completely alone and struggling with his own business deals, what to do, what not to do, क्या करें क्या नहीं करें. बहुत ही चिंतित व्यक्ति अभी सी बीच में बैठा हुआ है. उसने देखा एक ओल्ड व्यक्ति इसके पास आया and this old person saw this business person and he asked, I think you are in some trouble. Yes, I am in some trouble. Okay, tell me what's the problem. No issue, don't worry, it would be okay. No, tell me if I would be able to solve, I'll literally solve it. No, thank you very much. Then the old person automatically, replied, I think you are in need of money. Then he took up one check and signed and gave it to him and told, after 1 year, we'll again meet to the same place and you have to return the equivalent amount of money. And he went back. And after that, that business executive saw that check. It was $10 lakh check. And signature was John Rockefeller, one of the richest person of that time. He was surprised. My goodness, from nowhere this old person came and gave me a check of $10 lakh. He was very happy, ran to the bank just to encash that check. But he thought of, okay, by the way, I have this backup check. Let me once more try to have another business deal. और उसने एक और business deal start कर दिया. When he started that business deal, though he went to so many troubles and struggles in that life, he was sometimes able to manage, sometimes not able to manage. But within 6 months, he was able to develop his business 4 times bigger than what he had previously.
And after 1 year, he was a wonderful celebrities known all over the world as a business field. And after 1 year, he realized, अभी मेरे पास वो चेक है जो अभी तक मैंने इन कैश नहीं किया है. But he remembered the promise with that person कि 1 साल बाद हम दोबारा यहाँ पर मिलेंगे. He went back to the same beach and was sitting. Just sitting, within 1 minute from nowhere, that same old person came running towards him and stood up in very happy and enthusiastic way. He was just about to hand over that check and share his success story. But he saw something different. A nurse is coming from behind, running and chasing that old person. Hey, you, please stop, please stop. He caught that old person and kept on asking with this business person, oh, okay, I think everything is fine. This old person hasn't disturbed you. And this old person, this is a, mentally disabled person. He tells himself a jock feller and gives a duplicate checks to everyone. He was shocked. What? Duplicate check? He couldn't digest. That nurse, took that old person back to the hospital. And okay, it is okay. उन्होंने वो back ले गई. लेकिन but he was sitting and was literally meditating. What exactly happened? There was no check. That was forgy check. Now just see, he got a newly developed confidence. There was no real money. Where was that actually, this confidence lying? Can any one of you let me know? Where was this confidence? कहाँ से ये confidence आया? The money was not really exactly existing for this. This confidence. So the person supporting him made him confident. But where was this confidence? Where was this confidence? He confidence yes, exactly. Yes, this confidence was in itself, within himself, in the very mind. And that is why there's a great saying, motivation should not come from outside in. It should come inside out. And if such kind of motivation is there, when the source of motivation inside you itself, then you would have strong belief. And that strong belief, my goodness, can make you do wonder in your life, literally do wonder in your life. There's thousands of case studies. If someone has strong belief system, what not he can do in his life. A lady, can you name the first handicapped lady who climbed up the mountain? Any one of you? Yes, come on. Arunima Sinha. Yes, exactly. Now, good. A loud applause for, I think, Vikash Kumar. You answered it, isn't it? Thank you very much. Vikas has answered correctly. It was Arunima Sinha. See, handicapped lady. Just few years back, she got an accident. Accident, मतलब I mean to say, robots की वजह से उसका पैर कट गया था, ट्रेन के नीचे आ गया था. सी, अगर आपको बोला जाए कि आप मसूर की पहाड़ी क्रॉस कीजिए, सांस फूल जाएगी, जीभ यहां से यहां तक अटक जाएगी आप लोगों की. नहीं क्रॉस कर सकते. बट handicapped lady climbed up the Mount Everest. There are some cases in Africa, people are walking on burning coals. This is the power of strong belief system. And this strong belief system can take you height. And if you have a very weak belief system, can make you break at each and every instant of your life. So there's one video, how very strong belief system of the people, very positive attitude towards their life. Though there were failures in the life, but they became a successful person. एक वीडियो है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं. Try to see or watch that video very, very attentively. You're going to see very extraordinary celebrities in this video, and you learned a lot. Though they face failures in their life,
Though they face the ups and downs in their life, दिक्कतें आई उनके जीवन में, उन्होंने ये नहीं चलाया, हाय रे हाय जीवन बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं. They didn't take up a strong step in their life, but with a positive attitude, they move ahead in their life and they create a miraculous history for the people. So now I'll play this video for you. Let me know the video's sound is coming to you. You can note. Okay. And now just see, every of the celebrities or successful person, at least once in their life, they faced huge failures, isn't it? Though they face the failures, but they do not, yeah, they didn't remain failures. अपनी लाइफ में हमेशा फेल्यूर नहीं रहे, वो उठे और दोबारा ट्राई किया. फेल्यूर्स होना, इट्स नॉट इन अवर हैंड, बट फेल्यूर रहना ये हमारे हाथ में है. एंड इफ one is always remaining failure, my goodness, that's a great failures of his life. One can see like this. Just wait a second. Yes. So we can see behind every successful person, whether it may be a CEO, whether he may be a owner of the company, whether he may be a nature specialist, he may be a doctor, whatever he may be, the successful, or you can say secret of success, is that they were mentally strong. They have a strong belief system. They have a good amount of self-confidence in their life. And in every walk of their life, mind was supporting with them. But my dear ones, though these all were the cases, they faced failures in their life. Mind supported them and they got a success. But mind is also a greatest enemy.
One side, he's a great supportive person. At another side, he may act as a greatest enemy of the people. And that is why in the last century, the top 10 writers, out of top 10 writers, 5 committed suicide. See the writers who are highly philosophical, intellectual, very thoughtful, they committed suicide just due to this mind's one nature. Though at one side he's a great friend, but also it acts like a greatest enemy. So just moving ahead, I would like to mark your attendance. मैं आपको chat box में attendance link भेज रहा हूं, तो please आप लोग attendance mark कीजिएगा. Clear? In future, we'll also provide a certificates to you that you have completed all mind casting seminars, because these seminars are, a full package to make you a good human, a good person. So that's why attendance is very important in this one. So please, it's a request to all, आप attendance mark कर दीजिए. It's a request. And Abhinandan, you can post it on the WhatsApp group. Those are watching live on the YouTube. I think अब तो सभी आ सकते हैं, ग्रुप में आ सकते हैं. आप बोल सकते हो. तो those are watching live on the YouTube can come in the meeting right now. They'll mark the attendance. I hope you mark the attendance right now. Okay, thank you very much. My dear students, स्पेशली अगर देखा जाए इस सोसाइटी में कोई भी, अगर हम देखते हैं आजकल बहुत ये माइंड एक व्यक्ति को बहुत ऊंचा पहुंचा सकता है, तो बहुत बुरी तरीके से गिरा भी देता है. तो क्या ना इस माइंड को समझा जाए, इसकी स्टडी की जाए, एंड व्हाई नॉट टू अचीव द हाइट्स ऑफ सक्सेस इन अवर लाइफ. सो व्हाट यू वांट, mind as a greatest enemy in your life or mind as a greatest friend in your life? What you want to choose? Mind as a greatest friend. Now, how to make mind as a friend so that even in the worst situation, even in the failures, he helps you, not that he becomes an enemy of you. That we'll learn in the session. Now it's a request to all. Please, कुछ लोगों ने पहले कैमरा ऑन किया था, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. रिक्वेस्ट टू ऑल, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. और स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं जितने भी कॉलेज क्राउड होता है, स्कूल क्राउड होता है, एंड मैक्सिमम ऑफ द कॉलेज क्राउड्स राइट नाउ are going into depression just because one nature of this mind, a greatest enemy. When this mind is not supportive, what havoc it can do in society, now we'll learn over here. So in one side, this mind causes a depression. And specifically अगर इंडिया में हम बात करते हैं, तो 1 out of 4 people, especially youths, are under depression. By 2025, depression will be the second highest cause of dysfunctioning, or you can say disability of the people, and even can cause death right now. और specifically अगर हम कोरोना एरा की बात करते हैं, 85% alarming increment is there in the depression all over the world. And apart from depression, there's one thing more: stress and anxiety. And stress and anxiety, especially corporate life and student life, the stress and anxiety are increasing at alarming rate. हम देखते हैं even in IIT Roorkee and IIT Delhi, one graduate student, right now he's in corporate life. He came back to the college alumni. He went to the 7th floor of his hostel, jumped from there, and suicide note keeping in his own pocket. I want peace in my life. And the peace is Antim Shanti. See what happened? He's a graduated one. And similarly, when I was in 3rd year in IIT Roorkee, one boy from PhD, he committed suicide and wrote, I couldn't tolerate the stress of my life. Better I'll embrace death. See what is happening? अब सोचिए कोई IIT क्रैक करके IIT में एडमिशन लिया, and instead of utilizing that opportunities, what he's committing? He's committing suicide.
People go to prepare JEE in Kota, and in Kota, 500 suicides are there in last 5 years. These all are due to this depression and stresses and anxiety right now going around us. And it is said that globally, every 3 out of 5 people visit psychiatrist. और साइकेट्रिस्ट पागल हो जाते हैं व्यक्ति को देखते देखते कि one psychiatrist visits another psychiatrist. This is beauty of this stress and anxiety that is going around in the world right now, or especially according to Economic Times. 89% of Indians are under unmanageable stress, and that's why they are taking a very very wrong steps in their life. अब इतने stress और anxiety और depression life में हो जाता है, then people try to forget this stress and depression. How? By taking drugs. You will be amazed. You know what is the budget of Indian Army, Air Force, and Navy? The all three forces budget is 5 lakh crores per year. And what is the business budget of drugs in the India? 20 lakh crores. 4 lakhs, 4 times more than what 3 forces are consuming. आप सोचिए इतना ड्रग्स का रिवर फ्लोइंग चल रहा है आजकल भारत में. Every 2 youths are addicted out of 10, especially Punjab. My goodness, highest. And when I personally visited Punjab, I practically saw many of the people are, literally are consuming drugs. Even in Delhi, I visited some schools. Professors, principals are requesting, sir, please do something, save our students. Many of the students are consuming drugs, and that is very very dangerous for their whole career. And from the very childhood they are consuming drugs. What will happen? And due to all these things, what is increasing at alarming rate is another pandemic of committing suicides. 40,000 students had committed suicide in last 5 years. It means हमारा जब तक सेशन खत्म होगा उतने में एक स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं कमिट सुसाइड कर चुका होगा. आप सोचिए. This is what people are accepting in their life. Sushant Singh Rajput. Just see, he had everything. He was a successful person. What ultimately he did? He accepted a suicide in the life. Mind sometimes makes you so much and so much unsuccessful, makes you so much negative, makes you so much feel ill about others, makes you so much inferiority complexed person, that one person willingly accept suicide in his life. आप समझ सकते हो माइंड कितना बड़ा एनिमी बन के खड़ा हो जाता है. जब कोई सुसाइड कमिट करता है, क्या किसी के माता पिता बोलते हैं बेटा सुसाइड कमिट कर ले? कोई फ्रेंड सजेस्ट करता है? नो. हु सजेस्ट? माइंड सजेस्ट. बोलता बेटा अगर तुझे जिंदगी में शांति चाहिए तो शांति का रास्ता सिर्फ एक ही है, अंतिम शांति. And that's why maximum of the people commit. Death is what? That is very, enjoyable. Death is very, very suffering process, very, very suffering process. This person? This is Chester Bennington. This is one of the famous and leading singer of Linkin Park, the music band. Very, very famous. Still now people are very addicted to hear this band song, and he was a leading singer. The singer that is making others coming out of stress and anxiety. He himself hung and wrote a suicide note. I cannot face or tolerate stress in my life. What is this? So much. Mind can make you break if mind is not supportive. Another example, Robin Williams. He had been one of the most famous comedian of Hollywood world. आज तक ना ऐसा हुआ, ना हो सकता है. He himself also committed suicide. ऐसा व्यक्ति दूसरों को हंसा रहा है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुखों को बुला रहा है, making others happy in their life, but he himself is crying within his heart, and he committed suicide. And clearly postmortem says he was under heavily stressed and anxieties.
and that's why he committed suicide. What not? This mind can make you do worse. अगर ये mind क्या है? Unsupportive है. And that's why it is very important to understand the nature of mind and to control this mind. Last year, 24 students in different IITs attempted suicide. In IIT Kharagpur case, let me sleep forever. I do not want to live no more. He committed a suicide. All these things are happening. Why? Yes, come on, answer. Why all these things are happening? You can unmute yourself. Because we have no control towards our mind. Pressure. Yes, exactly. Those stress and anxiety, so many things will be there, but they're not able to tackle with them. This is all due to our dear uncontrolled mind. This uncontrolled mind can make your life havoc and hellish in that way. So to control mind, we'll understand the nature of mind. By understanding exact nature of mind, we can very easily tackle and control the mind very nicely. आजकल सोसाइटी में बहुत से लोग मिलेंगे, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, सर आई एम फाइन, बट पीपल आर हैविंग क्राइंग hurts, though they have smiling faces, but people are having crying hurts. They were a very famous story, you know, very, very famous story. There's a one very, चलो उसका secret तो मैं बाद में open करूँगा. There's one person, he visited a psychiatrist. I was a very rich person, you know, very, very rich person. And as in when he visited that psychiatrist, he told, now I do not want to live more. He told, what happened? You have everything. You have good family. You have good business. You have your followers. You have richest of so much rich you are right now. Then why you are going to commit suicide? Well, I do not know. I have so much, but I am feeling so much lonely and voidism in my heart. Then he told, okay, don't worry. I will give you such and such medicine and lifestyle. You will be happy. No, even that cannot make me happy. I'm following all. Okay, don't worry. There's now a ultimate medicine and cure for this. Okay, tell me. There's a one very famous stand-up comedian nearby me. Or he's making people forget everything. He's making people laugh. People are rolling on chairs, having tears of happiness in their eyes. Don't worry. If you'll visit that comedian, you will be happy in your life and you will forget all the stress and voidism. Don't worry. Go there. Okay. Doctor, वो भी मुझे क्योर नहीं कर सकता. Hey, why you are hopeless? Do not be hopeless. Give it a chance. Try at least once. Doctor, he cannot cure me. Believe me. Doctor बोला, why you are so adamant? तो फिर जो rich person था, he told the doctor, bring your ears close. Just secret. बोला, yes, I am the same comedian. I am the same comedian. He told, my dear doctor, there's a huge difference between making others simply show the 32 teeth and making others really happy. मान लीजिए संदीप नेहरा, सपोज समटाइम आपने देखा होगा, घर वाले अगर आपको स्टमक को टच करते हैं, गुदगुदी मस्ती है, देखा ना, गुदगुदी मस्ती है, गुलगुली, तो टच करते हैं तो लोग थोड़ा हंसते हैं. तो क्या उस हंसने से व्यक्ति के दुख खत्म हो जाते हैं? या बत्ती से दिखाओगे ई, तो क्या व्यक्ति का डिस्ट्रेस, एंजाइटी खत्म हो जाएगा? नो, इट डजंट हैपेंस. बट व्हाट हैपेंस, समटाइम्स ही फॉरगेट्स. और यही करता है जितने भी ड्रग्स और ड्रिंक के इंटॉक्सिकेशन होती हैं, यही तो चीज करती हैं. इसलिए आजकल आपने गाना सुना होगा, ये लोग बोलते भी हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को. तो people have so much gum in their life, I mean to say distress, miseries, they do not want to drink. But so much stress is there that they want to forget that miseries in their life, and that is why they adopt this
something that is very very harmful for their health even, तब भी ऐसी intoxication, drugs, drinking को लोग करना start कर देते हैं. So now we'll understand the science of mind, so that we can understand what the nature of mind. And once you understand nature of mind, then it is very easy to control and tackle. Now all of you can take some pen and copy and notes, or you can keep in your mind. There's very very important information now I'm going to share with you. Okay, what is exact, somewhat I shared. Now in a very different and a very easy way, I'll share the nature of mind. The spell of mind is M-I-N-D. So similar way we'll go. M will stand for something, I will stand for something. In this way, I'll give you full form of mind. So now, mind will understand characteristic of mind, and that is first M. M means magnify problem. The one of the nature of the mind. Nature means its characteristic, its habit. It magnifies the problem. बार 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 आपको वही दिक्कत को दिखाएगा 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 दिखाएगा, बार बार दिखा दिखा के आपको क्या कर लेगा, आपको बार बार दिखा दिखा के उसके प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा. नाउ सी, अगर आप पे कहीं घाव है, सम वाउंड इज देयर, और कोई बड़े पैर पर से मारता है टक 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 टक, तो क्या चोट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बहुत दर्द होगा. एंड एग्जैक्टली माइंड डज. कुछ भी आपके साथ गड़बड़ किया है ना, द मोर यू ट्राई टू फॉरगेट, मोर ट्राई माइंड विल ट्राई टू रिमेंबर यू. मिस्टर शिवाय, दिस सी, उसने तेरे को ऐसे बोला, ऐसे कैसे बोल दे तेरे को, अब तू दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा सकता. अरे तेरे दोस्त क्या बोलेंगे, अरे वो क्या बोलेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा. जस्ट सी, तेरा लाइफ तो खत्म हो चुका है. People become depressed. हाय हाय, ये क्या हो गया. You know, like something, let's suppose there's some breakup between one boy and girl. तो लड़की बोलते, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, मैं घर पर नहीं सोचूंगी, मैं कॉलेज में नहीं देखूंगी, मैं कभी उसके बारे में नहीं सोचूंगी. भाई किसके बारे में सोच रही है? उसी नालक के बारे में सोच रही है. Understood? The more you try to forget, the mind will make sure you remember same thing. This is the nature of mind. और exactly एक केस था, IIT दिल्ली बॉय था. एक्चुअली क्या हुआ, 3 साल लगातार उसने B ग्रेड प्राप्त किया. He got a B grade. तो स्पेशली यू नो IITs में जनरली होता है, आपके NITs में भी होता होगा. It's quite common in engineering life. People get their tagline, you know, tag name. जैसे कोई बहुत पढ़ाकू है तो गिस्सू नाम दे देंगे. सुना आप लोगों ने? आप कॉलेज लाइफ में तब पता चलेगा, अभी तो बेचारे ऑनलाइन घर पे पढ़ रहे हो. जब आओगे तो आपको कुछ टैगलाइन मिलेंगे. लाइक यू नो, इफ यू हैव गुड रैंक, यू आर यू नो डिपार्टमेंटल ओपनर या रैंक ओपनर, तो उसको बोलेंगे फोड़ू या खोलू. उस पर नए नए नाम देते हैं. तो इसका 3 साल में ग्रेड क्या आया? B. तो ही गॉट हिज नेम बिक्का. एवरी विल कॉल, ए बिक्का, ए कम ऑन बिक्का, ए कम हियर बिक्का. बोले यार हद हो गई, ये बिक्का बिक्का इतना अच्छा भगवान ने नाम दिया था, मेरा घर वालों ने ये क्या बिक्का बिक्का नाम रख दिया. एंड इन 4th year ही लिटरली कमिटेड विद हिमसेल्फ, अब मैं इसके बाद मैं B ग्रेड नहीं A ग्रेड लेके आऊंगा, लोगों को दिखा दूंगा मैं बिक्का नहीं, मैं इक्का हूं. और ही लिटरली वर्कड हार्ड so much, and so he was damn sure he'll get A grade in his exam. But destiny was a bit different. He got C grade. He got C grade. Now he was renamed and he got Khota Sikka. My goodness, before he was Bikka, now he's become Khota Sikka. Or this was a great shock of his life. Throughout the 3 years, he was called as a Bikka. Now he's passing out as a Khota Sikka. And this, just simply a name, Khota Sikka, became so much and so much big problem in his life due to this magnifying nature of the mind. My dear students, he got placement. Though he got C grade, but he left his life. He committed suicide. Can you see how this? See, क्या एक आपका नाम सिक्का क्या आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? No, never possible. But he committed a suicide. This is magnifying problems.
मूवर माइंड इस प्रकार से प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करता है। और अब हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे कैसे इवन कॉर्पोरेट लाइफ छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ा रूप ले लेती हैं इसी माइंड के नेचर की वजह से, बिकॉज इट मैग्नीफाई, जूम इन कर देता है सारी चीजों को। तो एक वीडियो प्ले करूंगा मैं आपके सामने, बहुत सुंदर वीडियो है। कैन यू सी? Just a small dikkat, just a small thing. That did he. My goodness. अभी और बाकी है। अरे गजब, गजब, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई बच्चे को छोड़ दे। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चले फिर तेरा बाप भी चलेगा। गजब। Now you can see small things can take up a very big problematic role in the life. छोटी छोटी दिक्कत कितना बड़ा रूप ले लेते हैं आप देखिए। Now what is the solution? Solution is, instead of magnifying problem, one should magnify fortune. Now how to magnify fortune? We'll learn from very wonderful story. It's not a story, it's a life incident. There's a very good tennis player, and he won the World Cup. And as in when he won the World Cup, just after that, 5 days after that, he detected cancer. So many reporters went to his home and asked, "Sir, now what do you say? How can you express this such a misfortune? Now you detected cancer." So he told very important things to learn for every one of us. He shared, now see, 10 lakhs people in America try to play tennis, and out of that only few thousands go to the journal, and out of these 10,000, few are able to go to the international competitions, and out of those, few goes in quarter final, few goes in semi-final, 2 goes in final, and only 1 wins that match. And I was the same person. जब मैं इतना बड़ा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत के आया, मैंने भगवान को यह नहीं बोला कि why you gave me this trophy. If I got detected cancer in my life, how can I blame someone else? And he very happily tried to treat his cancer as much as possible. देखिए कितना बड़ा सेटबैक था लाइफ में, इतना बड़ा 5 दिन पहले खुशखबरी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन हिज हैंड, इन अनदर हैंड रिपोर्ट ऑफ कैंसर. But he was having very positive attitude towards life. He could remain stable in the life. This was M. M means magnify problems. I imagines pleasure. One of the very nature of the mind, it imagines pleasure. Whatsoever it sees, it imagines pleasure. If you have a mobile, if you see another mobile, आपके मोबाइल में आपको आनंद नहीं आएगा, दूसरे के मोबाइल को देखने में, चलाने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा. माइंड इमेजिन्स प्लेजर. जैसे एक इमेजिन प्लेजर का आपको एक बहुत सुंदर वीडियो दिखाता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा माइंड कैसे प्लेजर को इमेजिन करता है. देखना अच्छी तरह से, देखना हाउ माइंड इमेजिन्स प्लेजर. Wow!
फटा पोस्टर निकला हीरो. Now, as and when mind sees, it keeps on imagining so many things. And this very same nature is studied by science and advertising industry. और इसी माइंड के नेचर को यूज करके एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सारा फायदा उठाती है. आप देखिए जितने सीरियल्स होंगी उसमें कोई नौकरानी भी होगी ना, बड़ी बड़ा ज्वेलरी पहन के बाकायदा गजब बाल रख के बिल्कुल सुंदर साड़ी पहन के निकलेगी, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल बड़ा मतलब सो के उठे, वो नाच के उठे, कहीं बेचारी कहीं से भी उठ के आए, बेचारे बिल्कुल इतना सज धज के आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल टिप टॉप एवरीथिंग. Actually what happens when people see this, they feel, if अगर हम ऐसा लाइफ नहीं जी पाए ना, तो there's no success of the life, लाइफ बेकार है फिर. What is this? हमें भी कोई ज्वेलरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है. और इन सीरियल्स के बीच बीच में एडवर्टाइज आएंगे, ज्वेलरी के एडवर्टाइज आएंगे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के एडवर्टाइज आएंगे, सो दैट वहां से इंस्पिरेशन मिला और यहाँ के खरीदेंगे. दिस वाज होल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. और आजकल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री तो इसी इमेजिनिंग प्लेजर को टारगेट करती है. आप देखिए कहीं सेविंग किट होगी तो उसके साथ लड़की छपी मिलेगी, किसी कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट होगा तो वहां भी गर्ल्स होंगी. आप समझ रहे हैं किस प्रकार से लोग गर्ल्स को या वुमेन्स को एज अ ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग. दे आर नॉट कंसीडरिंग इट्स दीज आर रेस्पेक्टेबल एंड लिविंग एंटिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. बट व्हाट दे आर कंसीडरिंग इट, दे आर कंसीडरिंग इट एज जस्ट एन ऑब्जेक्ट. और इसी चक्कर में हर जगह कहीं भी देखिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इस माइंड के नेचर का फायदा उठाती है. एंड एवरीवेयर दे ट्राई टू पोस्ट सम पिक्चर्स, सम इमेजेस ऑफ आजकल तो न्यूड इमेजेस लोग पोस्ट करने लग गए. माय गुडनेस, वेरी वेरी डिग्रेडिंग. और इसी चक्कर में 3 years बैक इंडिया आज तक कभी मैं टॉप नहीं करता. इंडिया ने टॉप किया था वॉचिंग पोर्नोग्राफी. व्हाट इज दिस? Just imagining pleasure. And everyone knows whenever one keeps on watching such kind of nonsense things or keep on browsing on the internet, आपने कितनों ने फील किया है after browsing arts and arts all together, we feel अरे I literally wasted my time. Have you felt this one? बट लेकिन उससे पहले माइंड विल टेंड्स टू इमेजिन, अरे यार कितना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कोई नहीं करता रहे. और ऐसी हार्मफुल चीजों में भी इस मूवीज की वजह से, मूवीज में हीरो सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो माइंड भी इमेजिन करता है यार आफ्टर ड्रिंकिंग ही बिकमिंग हीरो. अरे मैं भी शिवाय जब सुट्टा लगाऊंगा तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा, वाह. और आजकल तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वो ट्रेंड चल रहा है, इफ यू आर IITian, इफ योर गट्स यू शुड ड्रिंक स्मोक, यू स्मोक सिगरेट. मैंने भाई सिगरेट पीने से इसमें IITians में क्या रिलेशन है? But 95% of college students, they smoke cigarette just due to one thing, this imagining pleasure. और ये सारी चीज कहाँ से आती है? Watching all these movies and everything. और इसी की वजह से मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, what happens when one smokes cigarette. They're very beautiful videos, है ना? Your lungs. See what happened. One of the very famous book on case study, especially on America, written by Hadrick Smith. इन्होंने उन लोगों के केस स्टडी लिखा है. These were serial rapists, and these all were college students. And according to case study, it was find out these all became serial rapists just by watching pornography. All the lusty desires of those students, raised so much that they committed such a heinous act in their life. This all due to the one nature of mind, imagine pleasure. Now, how we can, solve this problem? By imagining truth. Truth is, there's no pleasure in such kind of nonsense things. There's no pleasure in drinking, smoking. By drinking, smoking, one momentarily forgets who is he, what is his role,
he momentally forgets the problem. He doesn't get or get rid of problems exactly. As there's no pleasure in all kinds of watching pornographies, all kind of doing nonsense kind of activities. Truth is, there's no pleasure in all these things. So अगर व्यक्ति इस ट्रुथ को जानता है, व्यक्ति इन चीजों के पीछे, इन ट्रैप में नहीं पड़ेगा. Now N means never satisfied and compare. Mind always keeps on comparing with others and never gets satisfied. मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, उसका लगा पैकेज 22 lakhs. I was so happy. He literally पास आया, गले लगा दिया, संजय I'm very happy, I got 20 lakh package in Google, I'm so happy, this that. और बस गले लग के बहुत खुशी खुशी शांति ली थी, तुरंत कॉल आ गया उसका फ्रेंड का, yes I got also selection. मैंने वाह अच्छा कितना, 23 lakhs. तो जैसे 23 लाख सुना, मेरे फ्रेंड ने बोला इसका 23 लाख कैसे आ गया यार, नहीं आना चाहिए भाई, क्यों आ गया. मतलब सोचो 20 lakhs की हैप्पीनेस भूल गया वो, लेकिन उसकी 23 lakhs क्यों आए. व्हाट इज दिस. He doesn't get satisfied what he got and he keeps on comparing with others. और इसी वजह से when one gets never satisfied, one becomes greedy. It was asked to one of the richest person, what you want more. What was his answer, Can any one of you know me? Let me know. What you want more? Yes? Satisfaction. He answered money, not satisfaction. Because mind gets never satisfied. Mind gets never satisfied. So though he's the richest of all, and what he wants more? Money and money. क्योंकि इस माइंड के नेचर की वजह से पीपल बिकम्स ग्रीडी, और इस ग्रीड की वजह से ही लोग गलत कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? सो दिस वाज अनदर नेचर ऑफ द माइंड, नेवर सेटिस्फाई एंड कंपेयर. इसका सॉल्यूशन क्या है कि वन शुड बी नेवर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, बट वन शुड बी सेटिस्फाइड विद द एफर्ट्स. बोले सर ये कैसे हम समझेंगे? थॉमस एडिशन, when he was asked, sir, how did you feel when you got 1,000 times failures, you couldn't make bulb? Who said I got 1,000 times failures in my life? What? Actually, I learned 1,000 ways of not to make bulbs. Understood? So one should have very positive attitude in the life. Even from the failures, even from the ups and downs, one should learn from one should have learning attitude. Okay, what should I learn from these failures? In every situation, there's a very positive thinking hidden. Now you have to find it out. And exactly what Thomas Edison did. Now D is denies reality. ये तो स्टूडेंट्स में बहुत होता है. एंड ड्यू टू दिस डिनाई रियलिटी, माइंड कीप्स ऑन फ्लाइंग ईदर इन पास्ट ईदर इन फ्यूचर. स्पेशली होता है, मान लीजिए आप कभी पढ़ने बैठे होंगे, पढ़ते पढ़ते माइंड चला जाएगा, एक दिन मैं संदीप नेहरा बहुत अच्छे ग्रेड के साथ और एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होगा, बहुत अच्छा पैकेज होगा, और फिर मैं जब गांव में आऊंगा और फिर वो मेरा इंतजार कर रही होगी. एक खाली प्लान बना रहे सबके सब, ड्रीम स्टेट में चल रहा है. मैं टाई बेल्ट सूट पहन के जैसे ही कार का दरवाजा खुलेगा, गांव के लोग मेरा इंतजार करेंगे हार लेके, स्वागतम स्वागतम संदीप स्वागतम. और उसके बाद में आई विल बिकम अ वेरी रिच पर्सन, एंड देन मेरे शादी होगी. उसके बाद छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, मुझे बुला करेंगे, संदीप पापा, ओह, so keep on dreaming and dreaming and dreaming. आंख खोलता बोला, तेरी यार अभी मैं इधर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ हूं, हम कहां पहुंच चुके थे यार, गड़बड़ हो गई. कीप्स ऑन इमेजिनिंग. एग्जाम पास आने वाला है, माइंड पास्ट फ्यूचर में घूम रहा है, या तो पास्ट में कुछ हुआ उसको सोचता रहेगा, या फ्यूचर में क्या होगा. People keeps on thinking that one. और स्पेसिफिकली लोग मूवीज इसलिए देखते हैं, मूवीज डिनाइज रियलिटी. जब लोग मूवीज को देखते हैं ना, जब हीरो हीरोइन
एक साथ हैं, अमावस्या की रात है, एक ही जूस का कप है, दोनों एक साथ एक ही जूस के कप से पी रहे हैं। वो उस हीरो को नहीं था, वो इमेजिन करता है कि मैं उस हीरो पे मैं हूं। आप समझ रहे हो ना? As if I am in place of that hero, and that's why people like to watch these movies. लेकिन बाद में पता चलता है यार, अरे यार हम तो वही कंगाली के व्यक्ति हैं, कुछ है नहीं, हीरो तो हीरो है, हम तो नॉन जीरो हैं। तो इस प्रकार से जो ये वाला नेचर है माइंड का, डिनाइज रियलिटी, इसकी वजह से लोग इवन एग्जाम भी पास हो रहेंगे ना तो लोग गाना गुनगुनाएंगे, बोले बबुआ एग्जाम पढ़ ले भाई, कर रहा है। और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा होता है। अगर एग्जाम आगे 10 दिन बच्चे, अरे कोई नहीं, 10 दिन 10 चैप्टर खलास, तब भी स्टार्ट नहीं करेगा। 5 दिन बच्चे हुए, 5 दिन, इसका मतलब 2 चैप्टर पर डे कर देगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी स्टार्ट नहीं करेगा। 5 दिन बच्चे हैं, बोला चलो कर लेंगे यार कर लेंगे, तब भी स्टार्ट नहीं करेगा। 10 दिन 10 घंटे बच्चे हैं, बोला 1 घंटा पर चैप्टर, उसके बाद तब भी स्टार्ट नहीं करेगा, बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, हमेशा भाई रहा है, पास हो जाएगा नकल के बहाने से। This is how this postponing tendency comes because mind denies reality. Mind reality को denies करता है। इसकी एक बड़ी शॉर्ट वीडियोस है इसके रिलेटेड। तो औरत यही देख रही है कि ट्रेन की पटरी पर ट्रेन आएगी, वो एंजॉय कर रही है बाहरी दुनिया को। आप लोग देख पाए क्या हुआ? नहीं देख पाए, थोड़ा सा अटक के वीडियो आ रहा हुआ है। ओहो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, ट्रेन की पटरी पे बच्चे को रखे और ही इज एंजॉयिंग, व्हाट अ सीन, या दिस जंगल है, सब कुछ बढ़िया है। वो देखा नहीं ट्रेन आ रही है, फिर ट्रेन आती है, बाद में उस बच्चे को किक करके मारते, खींच के लात तड़ाक, वो बच्चा कहीं और दूर जाके पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे ट्रेन से बचता है, वो बाद में मर ही जाता है। So this is what happens, realize reality. Now solution is one should be always in present. देखो पास्ट में जो हो गया उसे कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर में होगा उसको सुधार सकते हो प्रेजेंट में रह के ही। तो why you are roaming in future? Be always in present. तो जो लेजेंड्स होते हैं, they magnify fortune, imagine truth, and they satisfy with the results, and never satisfy with the efforts, and they always remain in the present. अब ये कंट्रोल माइंड, ये माइंड एक नाइफ की तरह है, अगर डॉक्टर के हाथ में तो ये किसी की जान बचा भी सकता है, और अगर किसी शैतान के हाथ में तो देखो सीधा राम राम सत्य होगा और कुछ नहीं होगा। फाइनल डेस्टिनी RIP। दैट्स ऑल। अब ये माइंड, ये अनकंट्रोल्ड माइंड होता क्यों है? अब देखो हमने माइंड के नेचर को समझा, अब कुछ समय का सेशन बचा हुआ है, वेरी शॉर्ट सेशन इज रिमेनिंग। अब माइंड ये अनकंट्रोल होता किसकी वजह से है? तो जैसी वेरी वंडरफुल बुक भगवत गीता, मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। ये वो बुक है कि बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन, CEO, मोटिवेशनल स्पीकर्स, व्हाट नॉट, इवन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, he's top most motivational speaker and CEO coach right now all over the world. He gives all the credits to Bhagavad Gita. तो गीता बताता है कि इस माइंड से आप अपने आप को बहुत ऊंचाई तक लेके भी जा सकते हो और बहुत ऊंचाई से अपने आप को गिरा भी सकते हो। सो माइंड हैज 2 पोर्शन, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जनरली 10% हमारे लाइफ से रिलेट करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 90% हम सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। ना व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस, और ऐसी एक्टिविटी जो बार बार हम करते हैं उन सब के इंप्रेशन इसमें होते हैं, या ऐसी इच्छाएं, ऐसी डिजायर्स दोस वी आर लिटरली एस्पायरिंग टू फुलफिल, बट लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई, ऐसी डिजायर्स भी माइंड में होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए विच वॉज मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर स्कूल, आपको याद होगा क्या? आपको हर दिन याद होगा? नहीं होगा। कुछ ऐसे एक्सट्रीम इमोशंस आपको हमेशा याद रहते हैं, जो मॉडरेट चीजें होती हैं वो हमें याद नहीं रहती। तो ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाती हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट सेंसेस के द्वारा इनपुट्स लेता है, और ये सारे इनपुट्स कहाँ स्टोर होते हैं?
सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। ओके फाइन, वेल एंड गुड। जब ये सारे इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं तो अब ये सारे की सारी चीजें जितनी भी स्टोर हो चुकी हैं ये क्या करती हैं, व्यक्ति को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं। हाउ दे कंट्रोल्स, आई विल गिव यू वन स्टोरी। मैं 2 लाइन बोलूंगा, आप बताने इसमें से कौन करेक्ट है। हॉर्स इज राइडिंग द राइडर और राइडर इज राइडिंग द हॉर्स। हॉर्स इज राइडिंग द राइडर और राइडर इज राइडिंग द हॉर्स। चलो आप सबने प्रयास किया, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स पे आंसर दिया है। नाउ कुछ लोगों ने वीडियो में बोला है, आई कुड अंडरस्टैंड। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, लेट सपोज राइडर इज ऑन द हॉर्स राइट नाउ और ये चला रहा है तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। चलो आप भी हाथ ऊपर करो, चलाओ तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। हाँ, एज्यूम घोड़ा है आपके हाथ में, तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। एक गड्ढा आया, क्या करोगे, जंप। और घोड़ा क्या करेगा, जंप। चलो आगे बढ़ो, तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। गड्ढा आया, आपने बोला जंप, घोड़े ने क्या किया, जंप। ओके कौन, कैरी ऑन कैरी ऑन। तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। गड्ढा आया, आपने बोला जंप, घोड़े ने क्या किया, जंप। ओके कैरी ऑन। तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। घोड़ सवार थक गया, सो गया। तुक्कुड़ 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 तुक्कुड़। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, लेकिन घोड़ा तब भी क्या करेगा, जंप। यस, नाउ हॉर्स इज राइडिंग द राइडर। Previously, rider was riding the horse, and now horse is riding the rider. Exactly what happens with the mind. Whatsoever inputs you are getting from these 5 senses, now all these impressions and inputs now control the people's life. Especially इसलिए आपने देखा होगा, जैसे व्यक्ति चाय से या फिर ड्रग से या इंटॉक्सिकेशन से एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मतलब इनके इंप्रेशन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, नाउ द इंप्रेशंस आर लीडिंग देयर लाइफ, दे लिटरली लूज कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। व्हाट कंट्रोल्स, नाउ द माइंड कंट्रोल्स देयर लाइफ। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में इंप्रेशंस क्या क्या है। अब हमारे माइंड में इंप्रेशन आप देखिए क्या क्या इंप्रेशन है, सारे के सारे हमारे माइंड में मूवीज से लस्टी इंप्रेशन आते हैं। और आजकल तो सॉन्ग्स भी इतने गलत सलत सॉन्ग चल चुके हैं। पहले तभी कुछ सॉन्ग्स मीनिंगफुल सॉन्ग होते थे, अब तो कुछ मीनिंगलेस सॉन्ग्स हो चुके हैं, हाईली मीनिंगलेस। और इतनी गलत सलत मूवी बनाई जा रही है कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। देन यू कैन इमेजिन कि हमारा माइंड कितनी गलत सलत चीजें इनपुट जा रहे हैं हमारे माइंड के अंदर। और फिर ये सारे के सारे इनपुट्स, दिस ऑल रॉन्ग थिंग्स, दी ऑल गार्बेज लीड पीपल्स लाइफ। अगर माइंड में सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है तो व्यक्ति क्या करेगा, कूड़ा करकट वाली एक्टिविटीज ही करेगा। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज गिवन इन भगवत गीता। दिस वेरी ब्यूटीफुल श्लोक बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। नाउ सॉल्यूशन इज देयर, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास मींस प्रैक्टिस, वन शुड डू प्रैक्टिस। एंड वैराग्य मींस आफ्टर नोइंग द नेचर ऑफ माइंड, आपको पता चल गया कि माइंड का नेचर क्या है, ऐसे ऐसे धोखा देता है, तो क्या करो, डिटैचमेंट। अब मैं मन की बात नहीं सुनूंगा, मन यहां मुझे धोखा देता है, मैं मन की बात नहीं सुनूंगा। तो यू शार्पन योर इंटेलिजेंस बाय स्टडिंग द मोस्ट स्कॉलरली और मोस्ट थॉटफुल, मोस्ट फिलोसॉफिकल बुक लाइक भगवत गीता या बाइबल, आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक को अच्छे से पढ़िए। बी वेरी वेरी थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल, आपकी इंटेलिजेंस शार्प होगी। और आपकी इंटेलिजेंस शार्प है तो आप मन को उतना ही ना बोल पाओगे कि नो आई विल नॉट हियर यू, आई विल नॉट फॉलो यू। अब माइंड के अंदर इतना कूड़ा करकट तो है, सो मच गार्बेज इन कर रखा है, वही गार्बेज आउट होता है। लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज भगवता पढ़ी हुई है तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत शार्प होगी। इंटेलिजेंस शार्प होगी तो यू विल हैव गट्स टू से नो। एंड व्हाट प्रैक्टिस वी शुड डू, द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कि एसोसिएट इंटेलिजेंटली। अब गलत सलत मूवी ना देखें। हम क्या मूवी देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या कौन सी सोशल मीडिया पे हम वर्क कर रहे हैं, कहां हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन सारी चीजों से इंप्रेशन आ रहा है। सो व्हाई नॉट टू वॉच मूवी, दोज आर इंस्पिरेशनल एंड साइंटिफिक। हियर म्यूजिक,
Those are, soothing, calm, composed and cultural. सोशल मीडिया पे फालतू में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू चीजों को नहीं देखना चाहिए. एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन सिंपली वर्थलेस एक्टिविटीज. और हमें शकुनी और मंत्रा जैसे फ्रेंड नहीं रखने चाहिए, अच्छे अच्छे फ्रेंड होने चाहिए. क्लियर. और अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने के लिए वन शुड ऑलवेज टेक अ सपोर्ट ऑफ बुक, दैट इज भगवद गीता, इफ यू हैव बाइबल, इफ यू हैव कुरान, if you have that books, one should study and strengthen one's intelligence. And very important practice is meditation. Meditation makes a people to give a strong belief system. विल पावर बढ़ा देता है एक्चुअली मेडिटेशन. आपके अंदर के अच्छे कार्यों करने के लिए आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपके अंदर के मोटिवेशन को बढ़ा देता है. दिस इज मोटिवेशन, एंड यू विल हैव स्ट्रांग विल पावर टू से नो टू द माइंड बाय meditation. So this is the process you can adopt in your life to get your mind under your capture or to control the mind. So would you like to do meditation for 1 minute? और स्पेसिफिकली बताते हैं, there is a University of California, वहां पर रिसर्च हुआ था and they collected so many meditators. बहुत सारी मेडिटेशन आजकल भारत में प्रिवेलेंट हैं, बट बहुत सारे मेडिटेशन ग्रुप्स को उन्होंने बुलाया एंड दे रिसर्च्ड कि अब इतनी मेडिटेशन हो रही है भारत में, which one is टॉप मोस्ट. तो ये तो पता होना चाहिए ना भाई. आपको पता है कि NITs हैं, IITs हैं, बिट्स प्लानी भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं. भाई कौन अच्छा है उस प्रकार से हम चूज करते हैं ना. ऐसा नहीं हम जाएंगे जी बिहार के स्कूल में, कौन है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पे कुछ नहीं होता, आप तो ना पढ़ने जाएंगे. एक अच्छे से अच्छे कॉलेज को आप सिलेक्ट करोगे. तो एग्जैक्टली वन शुड नो दैट विच टाइप ऑफ मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉप मोस्ट. तब वहां पर रिसर्च हुआ तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नोज पे मेडिटेशन करते थे या आंख बंद करके किसी लाइट पे मेडिटेशन करते थे या कुछ इस प्रकार से मेडिटेट करते थे या सिंपल कुछ ऐसे प्राणायाम भी करते रहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे. या देयर वर सम पीपल दोज हु वर टेकिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड, taking the names of Lord, names of even, so there were some Christians, chanting the names of Jesus. There were some Muslims that chanting the names of Allah. There were some Hindus people chanting the names of Lord Ram and Lord Krishna in that way, Lord Shiva. तो जब ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया तो it was found कि the people who were taking the names of God, that meditation process was 75% more effective than others meditative processes. Their mind was calm, composed, quite alert and very effective, and this was the most important state of mind जो व्यक्ति की होनी चाहिए. And that's why आजकल many of the foreign countries are adopting this meditative process, that chanting the names of divine names of God. तो हम भी just for 1 minute we'll do this meditation. So are you all ready? So I hope आप सभी बुढ़े लोग नहीं हो, 70 साल के लोग नहीं हो. You all are youngs. So sit straight. आप सभी सीधे बैठ जाइए. I request to all of you sit straight. Thank you very much. Good. और जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, पता चले कि आप लोग सीधे बैठे हैं ना बैठे. Others can switch on the camera if possible. Thank you, Vivek. Thank you. Yes. Now, what is mantra? Mantra is written on the screen. You must be knowing. आपने पहले भी ये मंत्र सुना होगा, बहुत ही फेमस मंत्र है. क्लियर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This is the mantra, not in India, in China, in Africa, in Australia, America, Russia, even Ukraine, even Muslim countries, Christian countries, Buddhist countries, what not, everyone is adopting this process. So effective, so effective. Within very short time आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट देगा ये मंत्र मेडिटेशन. तो करना ही चाहिए फिर 1 मिनट के लिए, तो है ना. ओके, सो हमें इसमें करते क्या है, वी नीड टू चैंट इट लाउडली. हमें लाउडली बोलना होता है और जो हम बोलेंगे उसको बहुत अटेंटिवली यू नीड टू हियर. मेडिटेशन इज ऑन द साउंड. दिस इज कॉल्ड साउंड मेडिटेशन. हम जो बोलेंगे आपको अपनी आवाज पर मेडिटेशन करना है, उसको सुनना है. हियरिंग इज द मेडिटेशन ओवर हियर. ओके फाइन. यू सिट स्ट्रेट.
I need to meditate with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. You know, आप लोग के मुझे पता है चला है कि आप लोग एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इफ एग्जैक्टली ये मंत्र मेडिटेशन माइंड को बहुत शार्प करता है, फोकस करता है, अटेंटिव रखता है और माइंड के गलत गलत चीजों को निकालता है। इसका मतलब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम होगा। So in the morning, if you can wake up early or in the evening before sleeping, you can chant for 5 minutes. It would be very relaxing, you know, very relaxing, and बहुत आपको हेल्प करेगा, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये मंत्र मेडिटेशन। तो होपफुली शायद आपको याद हो गया होगा, हमने 11 टाइम्स इसको बोला। Yes, hello dear students. Sorry, some other laptop got shut down. Can you hear me? Yes, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? Okay, good. Thank you very much. So ऐसा सेशन इज ओवर, तो एक फीडबैक फॉर्म है जो हम आपसे भरवाएंगे, जिससे पता चले कि आपको कैसा सेशन लगा। तो वन वेरी स्मॉल फीडबैक फॉर्म, तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। एंड एज सच सेशन इज ओवर, और इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन you are free to ask. First of all, kindly fill this form. Kindly fill this form. Kindly fill this form. जब तक फॉर्म को फिल कीजिए, एंड after filling this form, I'll give you permission to unmute. Chicken, just wait a second. आप लोग yes,
Yes, right now my voice is audible. Okay, thank you very much. I'm extremely sorry, some other I was not knowing laptop is just about to got discharged. आप इतना ध्यानपूर्वक बोल रहे थे. Session was going so nice. I got fully absorbed. But by the way, lately I have given seminars in so many institutes, so many institutes. And but hats off to all the NIT students. Very very attentively, बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुना. You were enjoying. I could see people were laughing, enjoying, writing the notes, and answering to the questions. So thank you very much. Now, if someone has question, can raise the hand. I'll unmute you. If someone has question, can raise the hand. Okay, Gaurav, I think you have question. Huh? Okay, yes, unmute कीजिए, बताइए आपका क्वेश्चन. सर आपने बहुत मस्त समझाया सर, मजा आ गया. आपका नाम क्या है? आपने मेरा नाम लिख रखा है. What's a good name? सॉरी, आपका माइक म्यूट हो गया, बताइए. मेरा नाम संजय सिंह वर्मा. संजय सिंह वर्मा. यस. ओह, 2 कॉपी कर लिया आपने नाम. नो सर, रियली वे. ओके ओके ओके, गुड गुड, थैंक यू. बताइए आपका प्रश्न. प्रश्न कोई नहीं है सर, मजा बहुत आया आपके लेक्चर में. ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट. देखिए, ध्यान रखिएगा, हमने प्रीवियस ईयर्स भी ऐसे सेमिनार्स लिए थे, बच्चों को बहुत हेल्प किया है, क्योंकि अभी आपने कॉलेज लाइफ देखा नहीं है. आगे चल के आप फेस करोगे इन सारी चीजों को, तो व्हाई नॉट टू मेक यू मेंटली स्ट्रांग. तो जिससे उन चीजों को आप उनमें फंसो नहीं, जस्ट किक देम आउट एंड जस्ट कीप ऑन अचीविंग द सक्सेस इन योर लाइफ. ठीक है ना? तो ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आपके रेगुलरली कराते रहेंगे. तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इन सेशंस को अटेंड कीजिएगा. क्लियर? थैंक यू विवेक. विवेक इज डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली. यस सर. Thank you, Ganesh. We'll keep on conducting such seminars. Thank you very much. Now, Shivai Verma, your question. Sir, we are so thankful for your seminar. We have got to learn more things from this, and it is really helpful for our life. Actually, the meditation, it will really help us. Oh, sir, good. So my so you like to do meditation? Yes, sir. I really do, but it is like just only meditating Sri Ram, Jai Sri Ram. Oh, very nice, good. But from now I will pronunciate what you have told us. Oh, very nice, good. Sir, I have to ask, question. which is really important, inspiration or motivation? See, even in inspiration is motivation, almost. I think my bandwidth is okay or not? Let me check. Okay. Yes, Shiva. Am I audible right now? Okay. Thank you very much. See, inspiration भी हो और या motivation, almost दोनों common words ही हैं in one sense. But one should take inspiration from the person that do not have wrong things. जैसे मान लीजिए मैं किसी celebrity से inspiration ले रहा हूँ. Let's suppose ऋतिक रोशन. He is my favorite hero. लेकिन जैसे ही मैं किसी wrong व्यक्ति से inspiration लूंगा ना, what will happen कि आप देखिए कि अब जैसे मैं किसी व्यक्ति को अपना इंस्पायरिंग एजेंट मानता हूं, तो आई ट्राई टू एग्जैक्टली फॉलो हिम. ही विल स्मोक सिगरेट या ड्रिंक या डू ऑल अदर काइंड ऑफ रबिश थिंग. वन थिंग विल कम इनटू योर माइंड, आई थिंक इट इज ओके टू ड्रिंक, देयर इज नो प्रॉब्लम.
and that's what is mentioned Bhagavad Gita, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदैव तरो जना. जैसा लीडर करेगा वैसे एग्जैक्टली फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, and that's why leaders should be a very ideal in their characters. So one should take inspiration and motivation from those person who have strong character in their life. Clear, Shivan? Okay, good. Yes, any other question? Yes, I think some are yours. Okay, just wait a second. Let me unmute you. Yet आप unmute कर सकते हैं. सर आपने बोला कि डिक्लाइंस द रियलिटी वाला जो है ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग है ना बिल्कुल पास्ट में चला जाते हैं या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, तो हाउ टू लिव इन प्रेजेंट देन? ओके ओके श्योर, वेरी नाइस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे बोलना चाहूंगा ऑफिशियली सेशन फिनिश हो चुका है क्योंकि इट वाज फॉर 1 आवर सेशन. तो जो डू वांट टू लीव कैन लीव एंड दोज हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस, दोज हु वांट टू इंटरेक्ट विद मी, दे कैन रिमेन ओवर देयर, है ना. सो थैंक यू सौम्या, आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है. व्हिच ब्रांच यू आर फ्रॉम? Okay, sorry, you are again muted. Yes. सर मैं इस कॉलेज की नहीं हूँ पहले तो. अच्छा, okay, fine, no issue, no issue. Okay, good. अब देखिए सबसे पहले to be in present, one should know that there's no use of roaming in the past. There's no use of lamenting for the past. And so if you really are concerned for future, you have to be in present. The present gives results in the future. The results of present is future actually. So if you're simply dreaming about the result, not doing giving action for the result, that daydreaming will not result in anything. Simply waste of the time. So one should intellectually understand that past lamentation and future concern or future overthinking is of no use. What is of use? To be present, and in present I have to act very nicely. मुझे अपना कार्य बहुत अच्छे से करना है, and by this one can really be in present because पता है कि past में future में रहने कोई फायदा नहीं है. This is simply daydreaming. By that understanding you can nicely remain in the present. और जब आप meditation करोगे regularly ऐसे session, thoughtful session आप attend करोगे, your intelligence will become more sharper. The more sharper will be your intelligence, you will have stronger willpower to stay in the present. So this is a promise. Clear? Okay, yes, next question. I think Gaurav. Batai Gaurav. Good morning, sir. Good afternoon. Good morning, by the way. Good afternoon. So my question will be a bit out of context, but I would like to see your face. So my camera is actually broken. अच्छा अच्छा, कोई नहीं. But yes, आप कौन सी year से हो? I'm also not from this college. Oh, very nice. Even like from other colleges, students have joined us. Thank you very much. Go on. So I just want, while doing meditation, I was just wondering if Soumya was single or not. It's a wrong thinking, है ना? It's a wrong thinking. और आप लोग जिसकी पर्पस के लिए आए उस पर्पस के लिए आप लोग क्लास अटेंड करना चाहिए. ठीक है गौरव? It's a wrong thinking. Okay, thank you. Yes. Any other question? Sandeep. Sandeep, you can unmute yourself. सर आपने जैसे कहा कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं अभी प्रेजेंट में. सर फ्यूचर में जैसे हम हमारे गोल को सेटअप है, हमारा गोल सेटअप है. We should plan for the future. प्लानिंग करना चाहिए. I got a question. जैसे हमने गीता में भी पढ़ा, यदि हम हमारे गोल को सेट करते हैं, उसके बारे में सोचते ज्यादा है, तो हमें जल्दी अचीव होता है, उसके बारे में ज्यादा मोटिवेट करता है हमको. देखो, एक होता है कि roaming in the future doing nothing. One is keep on planning as well as acting. You're planning for the future. It's good. One should plan, then only one can act. So that's called, before mission there would be a vision. The vision is for the future. That should be.
but remaining vision there is no mission. That is wrong. ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए. Clear? Yes, sir. In exam time ऐसा होता है. They develop this habit of thinking becomes overthinking, and sometimes you keep on passing time. Clear, Sandeep? Yes, sir. Okay, nice. So thank you very much. You all heard with a huge attentiveness. I am very thankful. So soon we'll conduct our next session as well, and that would be our very important aspect, life, that will change the vision to see the life. अभी तो हमने mind से आपको कैसे tackle करना ये बताया. Now in next section we'll go a bit more deeper than mind itself. Okay, so thank you very much.